India, a land where many civilizations, in their culture and traditions, strived to make water available, accessible, and more remarkably, affordable for their people. One such tradition that is surviving the times of privatization and commodification is seen in the water-scarce Kaladera village, which is situated 40 kilometers from Jaipur, in Rajasthan. As the summer months arrive, you would see the presence of earthen pots filled with drinking water put every 5 to 6 kilometers by the ones who feel that making water available for people is a virtuous deed that brings you closer to bliss. They call these earthen pots as PYAYU. ऐसा होता था जी प्याऊ पहले पैदल चलते थे आदमी, ये साधन नहीं था देखने के लिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं देखा है साधन नहीं थे। 10-10 कोस 12-12 कोस पैदल चलते थे। उसके अंदर भाई कोस 2 कोस के अंदर प्याऊ तुम्हारा जैसे पैसे वाला आदमी लगा देते थे, उसको तनख्वाह देते थे 10, 20, 30, 40, 50 रुपये महीने का, और वो भर के प्याऊ लगा देते थे। तो आया गया वो पानी पाता था। जैसे आप जैसे बागवान चारना दे देता, अन्नी दे देता, उस प्याऊ वालों को वहाँ पानी पीकर और 2 घंटा 8 घंटा आराम करके रवाना हो जाता, इसलिए बैठाते थे। ये भी हमने देखी हुई है। The striking part about the tradition is the belief of treating drinking water as a gift, despite having an industrial area right across the road, with a Coca-Cola plant delivering Kinley water with a price attached to it. The people remind me of the times when just few decades back the water was available at just 20 to 30 feet deep. With new borewells now being dug at around 600 to 700 feet, the Kaladera watershed stands designated as an overexploited zone by the Central Groundwater Board. अब अंदर अगर अपन बोर करवा रहे हैं, 100-200 टीसी चला रहे हैं या मान लो कि बड़ी मशीन चला रहे हैं, पत्थर निकाल के, तो पत्थर में तो पता नहीं कैसा भी आ जाएगा पानी का, क्यों वो तो डीजल ही निकलता है आजकल राजस्थान में, तो पानी तो क्या खा रही है। The earthen pot, matka as they call it, is a significant feature of each and every household in Kaladera. Surprisingly, beyond the tradition, there is much more to the use of earthen pots by the locals. For them, earthen pots exhale the excessive dissolved solvents and fluoride from the water, in turn making the water sweet and apt for drinking. जैसे मान लो कि घड़े के अंदर तो स्वाद ही अलग हो जाता है, क्योंकि मटकी का वो माटी का भी स्वाद आता है मटके में से पानी पीने से, और वो अपने आप ऑटोमेटिक फ्लोराइड होती है तो मटके के ऊपर आ जाती है, तो वो साफ हो जाता है। बोतल के अंदर तो क्या है कि वो जैसे ढक्कन लगा के अपन फ्रिज में रखते हैं, वो सब वैसा पानी मिलता है। More research needs to be done to find out what actually makes the outer appearance of earthen pot become whitish after some time of the use. But before that, imperative was to find out if there is presence of fluoride in water. Indian Natural Resource Economics and Management (INREM) Foundation is a research institution probing societal issues concerning water and public health. With the help of Dr. Sundarajan, Executive Director, INREM, I was able to test various sources of water supply in the village. The color change in the water from the main tank responsible for delivering water to around 2,000 to 3,000 households indicated the presence of fluoride beyond its permissible limit. Whether it's the water crisis, the high amount of total dissolved solvents, or the presence of fluoride, the locals once believed
that the industrial area had a major role to play in changing the nature of their water. The resistance that was once seen on the streets is now visible in the form of PYAYU and earthen pots, a tradition, a water ethic that is sustainable and opposes looking at water as a commodity. ये जैसे मिनरल वाटर होता है ना, जैसे करोड़ रुपए लगा के मशीन तैयार करते हैं और मशीन से मिनरल वाटर तैयार होता है। घड़े में पानी डालो, अपने आप मिनरल वाटर तैयार होगा। The declining water table and its unavailability has pushed the marginalized to further peripheries. The Banjaras and the Rana community live at the periphery of the village, having very little access to water. And it's often seen that children and women bear the brunt of making water accessible. आपको क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे पानी लेके आते वक्त? रोड के पास जाते हैं ना दूर, जब वहाँ पर गाड़ी बिजी लग जाती है ना, जिसके लिए हमें डर लगता है वहाँ पर। तो आप क्या चाहते हो? मेरे को यहाँ पर नल लगा दो। तो आप पानी कहाँ से लेके आते हैं? पानी दुकानों से भर के लाते हैं, कोई भरने देता है, कोई नहीं भरने देता है जी। कहता है कि कहाँ से आए, कहाँ से जाओ, वहाँ के भर के लाओगे। हम बहुत मुश्किल से एक एक डब्बा भर के लाते हैं, पानी का एक एक डब्बा। ये है गरीब आदमी हम तो। With such inequalities in place and the groundwater levels dropping at an even faster rate, there is a need to bring the policy initiatives from boardrooms to the ground. If you ask Professor Rathore, who now runs the Center for Environment and Development Study in Jaipur and was interviewed by Mark Thomas for his book regarding the future of Kaladera and its water, the future and the times ahead are rather bleak. Despite the odds amid the water crisis, each year Sri Ram Sankla and some like him keep PYAYU outside their homes or in and around the village to make drinking water available. बता सकते हैं कि प्याऊ में ज्यादातर लोग कौन पानी पी रहे हैं? नहीं, वो सभी लोग पीते हैं उसमें। जैसे बच्चे आ गए, स्कूल के बच्चे, और जैसे मजदूर के लोग, इधर से जाने वाले लोग, मतलब ये अब नहीं बता सकते कि कौन पी रहा है कौन नहीं। The water governance and policy for Kaladera needs to be married with the beliefs and traditions of the locals in such a way so that the culture remains, and so does the water, for itself, for the people, their agriculture and ecology, and future generations to come.